हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय हैप्पी कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? वी आर डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। सो ये हमारे मुंबई स्टे के कंटिन्यू ब्लॉग्स हैं एंड हम गए थे वीकेंड के इवनिंग को डिनर करने के लिए स्टमक रेस्टोरेंट, जो एक चाइनीज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, बांद्रा में लोकेटेड है ये। सो हम आइकिया स्टोर विजिट करने गए थे एंड वी वर सो टायर्ड क्योंकि हम लोअर परेल गए थे। सो देन हमने डिसाइड किया कि हम डिनर यहाँ पे खाएंगे एंड आई कांट टेल यू यहाँ पे कितना वेटिंग चल रहा था। सो फाइनली काफी वेट के बाद हमें जाके अराउंड 11 PM यहाँ पे एक टेबल मिला। एंड वीकेंड पे यहाँ पे इतना वेटिंग चलता है that you have to literally stand for quite some time to get a table over here. And this is a very popular restaurant in Bandra, and it's one of the oldest restaurant in Bandra serving Chinese cuisine. And since we were very tired, I didn't shoot much at stomach. So यहाँ पे हमने order किया था ये Chinese fried rice, which is the chicken fried rice. So this was very tasty. और फिर हमने ऑर्डर किया था ये ओरिएंटल चिकन हक्का नूडल्स, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। सो वी रियली एंजॉयड आवर फूड ओवर हियर। सो अगर आप बांद्रा में हैं तो आप स्टमक रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करिए। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट in Bandra and they serve very good Chinese food at a very good price and the quantity is also very good. So this is our visit to IKEA mall. So स्टमक रेस्टोरेंट में डिनर करने से पहले हम लोअर परेल गए थे IKEA मॉल, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। एंड IKEA मॉल यहाँ पूना में अवेलेबल नहीं है। दे आर ओनली देयर इन मुंबई एट लोअर परेल एंड वाशी. So now we are having our tea and IKEA mall is not available in Pune, and in Pune they only have a distribution center. I'm hoping IKEA mall jaldi se Pune mein bhi open ho jaye. And we quickly had our tea and we decided we'll go and see the whole mall now. So मुझसे जितना हो सका मैंने उतना IKEA mall आप लोगों के लिए कवर किया है। So आप ये IKEA mall enjoy करिए and thank you so much. हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को।